Hi everyone, Ashish Kyal here. Very warm welcome. And today's topic for discussion is how to trade Bitcoin spreads. और इसके ये करने के लिए हम यूज करेंगे एक टेक्निक का जो है एलियट वेव का. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों. आई एम गोइंग टू शेयर अक्रॉस माय findings, my learnings, and I'm going to see if there is a trading opportunity, how we can trade these spreads, how we can do that on platform known as Delta Exchange. तो रिसेंटली इन्होंने एक स्प्रेड्स लॉन्च किया, स्प्रेड ऑप्शन स्प्रेड्स. स्प्रेड्स में क्या है कि अगर हमें कोई स्प्रेड बनाना है, इफ आई वांट टू बाय अ कॉल एंड सेल अ कॉल, तो हमें एक लेग बाय करना पड़ता है, फिर जाके दूसरा लेग सेल करना पड़ता है. इसमें दो दिक्कतें हैं. वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी फेस व्हेन डूइंग दैट इज दैट व्हेन आई एम बाइंग अ लेग, I get I have to pay a brokerage. When I'm selling that leg again, I have to pay a brokerage. That's on the one leg. On the second leg again, when I do that, I have to again pay brokerage. So they have created a wonderful product which is a spread directly, which is दोनों का एक buy होगा, एक sell होगा parallelly, and brokerage भी एक ही बार लगेगा on one side. मतलब buy करते वक्त लगेगा, sell करते वक्त लगेगा. So instead of 4 times, we are going to charge only twice. That's the plus. Second, I can directly put a stop loss order on the spreads. Now that becomes very convenient. नहीं तो क्या हो रहा था, अगर मैंने एक ऑप्शन लेग को बाय किया, सो आई हैव टू पुट अ स्टॉप लॉस ऑन माय रिस्कियर लेग. वो लेग एग्जीक्यूट हो गया तो मुझे दूसरे लेग को स्क्वायर ऑफ करना है मैन्युअली. नाउ दैट वाज अ चैलेंज, बट बिकॉज वी हैव अ स्प्रेड नाउ, I can directly put an trade on the spread. I can put a stop loss on the spread, and I can also get the benefit of margin. So if I'm buying a call and I'm selling a call, so the margin requirement will be substantially lower. Now that's the beauty of spread trading. And I'm glad that Delta Exchange introduced that pair trading strategy. And we are going to see how to trade. And if there is an opportunity, I might just execute one like I did last time. But before I move on, I just want to tell you very clearly, trading in crypto is risky. You need to ensure that you are not trying to just do anything and everything, क्योंकि volatility बहुत ज्यादा है दोस्तों यहाँ पे. So just ensure you understand the risk before you pull the trigger. बहुत important है. It's your hard earned money. But अगर opportunities भी उतना ही है, जितना रिस्क है रिवॉर्ड भी वैसे ही मिलता है. अगर सही ट्रेड किया तो पैसा भी बनता है, गलत किया तो स्टॉप लॉस लगाना है. We will get out equally fast. Also, if you're liking these videos on crypto, Bitcoin, ensure you put your comments what you want to see, and what topics you want to cover, you want me to cover. So I put that in the comment box. And if you want to know more about Delta Exchange, you will find it in my comment pinned, and also in the description how you can go about checking them, how you can see the charts. The beauty is you don't really have to put money now. You can at least open an account. You can just check how it is working, and you can see how it is being traded. I'm going to share that all across, all the knowledge with you right now. और ये जो भी मैं कर रहा हूँ, it's purely learning and educational perspective. I'm not asking you to do or trade anything. So once you go here, you can see the markets. पहले तो चलते हैं markets पे, spot पे चलते हैं दोस्तों, and देखते हैं कि spot chart पे Bitcoin पे हो क्या रहा है. Directly यहाँ पर Bitcoin open किया. You know the best part is आपने जैसे ही ओपन किया, आपका जो भी स्टडीज आपको अप्लाई करना है, यू कैन अप्लाई दैट. ये मैंने लास्ट टाइम अप्लाई करके रखा था, बॉलिंग अ बैंड्स, all of these things you will find it here. Now I'm going to go on the daily time frame chart, and I want to check first from the wave perspective. यार क्या लग रहा है, क्या हो रहा है. I'm going to hide bands, I'm going to hide volumes. I don't need an ETR here, and it's very, very comfortable. So if I'm looking at the wave perspective, so first thing that I can see, and this is purely from Elliott wave perspective, is what I'm applying these entire studies about. बहुत ही क्लियर है Elliott wave पैटर्न. अगर आप यहाँ पर Elliott wave देखेंगे चार्ट के ऊपर, क्या पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ. दिस राइज विच हैपेंड ऑन द बिटकॉइन ऑन द अपसाइड कंप्लीटेड वेव 1 हियर. ये ABC के अंदर वेव 2 कंप्लीट हो गया दोस्तों. इसके बाद में यहाँ पर थर्ड वेव ऊपर आया. This was the fourth wave, and this is the fifth wave which got completed. A very, very clear 5-wave rise that you can see on Bitcoin. Post this completion, this is the fall which is going on. तो मतलब हम इस rise को retrace करें. सारे rules Elliott wave के follow हुए. Fifth wave, third wave is not the shortest. Fifth wave is formed a double top. वहां से reversal हुआ है. ये पूरा जो fall नीचे आया था यहाँ पर, this looks like this was just wave 1 here,
on the downside. This was wave 2. यहाँ पर third leg complete हुआ, possibly fourth leg is over here and we are right now in the fifth leg which will go down. ऐसा लग रहा है which will be the first wave A. And इसके बाद में हमारे wave B आएगा, then we will have wave C. So this is purely from Elliott wave, people who understand Elliott wave. Now इसका मतलब है मेरा व्यू फिफ्थ वेव को अभी राइड करना है नीचे की ओर. There are two ways you can do it in options on Bitcoin. Either you will buy a put option or you will sell a call option. अभी कॉल सेल करने में प्रॉब्लम है कि हेज करना पड़ेगा. तो सबसे इजी तरीका जो यहां पर मैंने देखा है इज बाय लुकिंग एट दी एंटायर कॉन्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेड्स. एक तो वो हो गया. दूसरा एक और चीज जो यहाँ पर एक और चीज है, you can even look at these options of spreads. Once you go on the options of spreads, I'll just click here. You directly are on the spreads now. देख रहे हो आप यहाँ पर. अभी ये स्प्रेड का मतलब हो गया. चलिए कॉल स्प्रेड्स के बारे में देखते हैं. 8 September, 9 September, we have daily spreads which are opening up. Now 9 September के ऊपर मैंने जब क्लिक किया, कॉल स्प्रेड्स है. यहाँ पे आई कैन सी 26,200 का कॉल है विच इज बाय साइड एंड 26,400 का कॉल है विच इज सेल. सो ये स्प्रेड क्या है? बाय 26,200 कॉल एंड सेल 26,400 का कॉल. लेकिन हम बेरिश है. हम एक्सपेक्ट करें मार्केट शायद नीचे जाएगा बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट वी आर सीइंग एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो डाउन और बिटकॉइन टू गो डाउन. We will sell the spread, which means we are selling 26,200 ka call and we are hedging by buying 26,400 ka call, which means if Bitcoin expires in between 26,200 to 26,400, we will lose money because my 26,200 will become in the money and I might end up losing 200 points on that and my 26,400 might expire worthless. So उसमें थोड़ा पैसा हमें मिल जाएगा. Now if it expires anywhere below 26,200, I'll make a lot of money. So in this kind of a scenario, I'm hedged to some extent and I can also put a stop loss. So if I go here and click on it, the best part that you can see is directly the chart opens up. That's the beauty of it. I'm going on a 15 minutes time frame chart. I'll zoom out and we can clearly see the entire 26,200 and 26,400 का स्प्रेड यहाँ पर ओपन हो गया. दिस इज अ 15 मिनट चार्ट ऑफ बिटकॉइन. सो देखिए मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, बहुत शार्प होता है, इसलिए मैंने कहा यू हैव टू बी केयरफुल. नाउ इट वाज अराउंड $80 जस्ट सम टाइम बैक. लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप देखेंगे तो $55 पे था. मतलब 55 से आप देखो ना क्रैश होके नीचे आ गया. एंड अभी रियली बिड आस्क है 21 और 16.5. तो अभी फिलहाल $18.8 के आसपास मुझे ये ट्रेड करने को मिलेगा. तो आई कैन सेल 26. सो आई एम नॉट बाइंग दिस स्प्रेड विच मीन्स आई एम सेलिंग अ 26,200 का कॉल एंड आई एम बाइंग अ 26,400 का कॉल हेज करने के लिए. आई कैन ऑल्सो अप्लाई अ स्टॉप लॉस. ओके, सो इफ आई हैव टू ट्रेड दिस एंड व्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम बिटकॉइन. सो एक बार मैं बिटकॉइन पे वापस आ जाता हूँ, आपको व्यू बता देता हूँ ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम चार्ट एंड ऑल ऑफ दिस चार्ट्स यू कैन गेट एंड इट्स अ ट्रेडिंग व्यू इंटीग्रेशन ऑफ द चार्ट. सो बहुत इजी है ट्रेड करना. नाउ लुक एट द शार्प सेल ऑफ दैट यू सॉ ऑन द बिटकॉइन ओवर हियर. इतना शार्प सेलिंग आया, ये बाउंस बैक आया. आई वांट टू सेल दिस बाउंस बैक. कल तक एक्सपेक्टेशन ये है कि यार ये 26,200 नहीं निकलना चाहिए. अगर वो निकल गया तो ऑफ कोर्स नुकसान हो जाएगा. सो राइट नाउ इफ आई एम कमिंग हियर, आई एम लुकिंग एट दिस एंटायर चार्ट एंड आई एम गोइंग ऑन दी स्प्रेड्स अगेन. यू माइट वांट टू क्रिएट मच लीवरेज करके आपको स्प्रेड बनाना तो आप पुट बाय करके नीचे का पुट सेल भी कर सकते हो. सो दैट वे यू आर बाइंग द पुट ऑप्शंस. देन over here now I'm on the spreads, on the call spreads and 9th September की एक्सपायरी हम ले रहे. I can see 26,200 का एक स्प्रेड है बाय और सेल जो मैं सोच सकता हूँ. एंड ओवरऑल इफ आई गो डाउन आई कैन सी 26,400 का भी एक और है. 26,400 26,600 का स्प्रेड है तो रिस्क कम हो जाएगा. एंड बट करेंटली द प्राइस इज
वेरी लो, इट इज जस्ट 8.5 के आसपास का प्राइस है जो यहाँ पर हमें मिल रहा है. दैट इज द प्रॉब्लम. सो यहाँ पर प्राइस नहीं है ज्यादा अगर मुझे ये ट्रेड करना है, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम विच आई हैव इज दैट आईवीज भी हम देख सकते हैं. इससे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो. यहाँ पर ज्यादा कुछ बनेगा नहीं अगर मैंने ये ट्रेड किया, लेकिन ये सेफ बैट है. तो अगर मुझे सेफ बैट करना है तो आई कैन स्टिल लुक एट इट यार. ठीक है, 26,400, 26,600, तो 26,400 के लिए आज का हाई निकालना पड़ेगा. तो एक सेल करके ये देख लेते हैं. चलिए, तो यहाँ पर मैं जाऊंगा. I'll directly go here. I can see here the entire bid. What is the bid? I can put it at around say $8 पे मैं डाल देता हूँ प्राइस. क्वांटिटी आई कैन पुट इट इन टर्म्स ऑफ कितने बिटकॉइन मुझे ट्रेड करना है. आई वांट टू ट्रेड से 1 बिटकॉइन, सो आई कैन जस्ट पुट 1 बिटकॉइन एंड आई सी कितना मार्जिन या कितना पैसा मेरा जाएगा. सो आई वंस आई क्लिक ऑन दी सेल. Okay, I'm just checking if maybe let us just check 0 point. I'm just checking if 0.1. Okay, this can under isolated margin mode only. So I might have to change my margin mode. So margin mode मुझे change करना पड़ेगा. Let me show you how do we change the margin mode. क्योंकि combined portfolio margin क्या होता है? Combined portfolio margin होता है कि मेरे को एक का बेनिफिट दूसरे पे ले जाए, लेकिन ये स्प्रेड डायरेक्टली कंबाइंड ही है, इसलिए मार्जिन मोड चेंज करना. तो एज आई वाज सेइंग, मार्जिन मोड चेंज करना है तो यहाँ पे पोर्टफोलियो के बदले आई कैन मेक इट आइसोलेटेड मार्जिन मोड. ठीक है, स्विच टू आइसोलेटेड मार्जिन. यहाँ पर पोर्टफोलियो मार्जिन जैसे मैंने बताया, अगर आप पेयर ट्रेडिंग खुद से कर रहे हैं तब आप पोर्टफोलियो मार्जिन अप्लाई करेंगे. एंड वंस यू चेंज दिस मार्जिन मोड टू आइसोलेटेड, दिस ऑप्शन विल बिकम enabled and we will be able to put the order and trade it here. Okay, let's just check that. So now I've changed the margin mode to isolated. I'm now putting if you look at it, the mark is at 7.5 and it has come down substantially. So अगर मुझे ट्रेड करना है तो बहुत नीचे जाके मुझे ट्रेड करना पड़ेगा इस स्पेसिफिक क्वांटिटी में. तो एक काम करते हैं, इसके बदले हम दूसरा वाला स्प्रेड ले सकते हैं या इसको लिवरेज ज्यादा कर सकते हैं. सो आई एम जस्ट शोइंग इट अक्रॉस राइट नाउ. इफ आई वांट टू बी सेफ, I will sell 26,400. I will buy 26,600. But if I want to really leverage, but if I want to really take that bet, I might want to do 26,200 and 400. Up to you what risk you are okay taking as of now. Now, if I come here, I can simply go here and I can mention that, okay, I want to sell at 7 and I want to sell 1 Bitcoin. So I click on this and directly I can see I will be getting an estimated premium of $7 and what is the fee that I'm going to be charged, everything, and how much I can lose, where is my liquidation, everything you will be able to see it from here. And approximately 200 USDT, मतलब 100 times leverage मिल रहा है मुझे. So I can simply go here, I can place my order and the order is submitted. Once it gets executed, we will see, once it gets filled, I will also go and apply a stop loss because I don't want to trade without a stop loss for sure. And that is very very important. So फिलहाल order डाला है, pending है, and we might want to wait for it to get executed for one single Bitcoin. So this is how you can trade the market. You can trade the spreads, and I'm sure you will once you start doing it, practicing it, you will really love it. But इसमें as I said, you have to, this is just for learning. And if you want to know more about this platform, you can check it on the link which I have shared across. And it's very interesting exploration that I'm doing right now on Bitcoins, spreads, options, and all of these things. And it's really interesting the way I am seeing it. Especially the spread part is really, that got my attention. So I thought I'll share across with you all. Thank you very much. और जाते जाते और भी बहुत सारे वीडियोस है YouTube पे, देखना ना भूले. बॉलिंगर बैंड्स की सीरीज भी है, वो सब देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही में अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट में डालिए, चैट में डालिए, सो दैट मुझे पता रहे कि आपको ये वीडियो पसंद आया. आई विल मेक मोर ऑफ सच वीडियोस फॉर यू ऑल. थैंक यू वेरी मच गाइस. हैव अ वंडरफुल डे एंड बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर. आशीष क्याल साइनिंग ऑफ.